बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी कंपनी का मशकूर हूँ कि आपने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से, इसकी सेलिब्रेशंस, इसकी अवेयरनेस के हवाले से प्रोग्राम तरतीब दिया है। तो मैं अपना पहले तारुफ करवाना चाहूँगा। मैं डॉक्टर नियाज़ मकसूद, वर्किंग एज प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री एंड behavioral sciences, heading the department of psychiatry and behavioral sciences, and currently working as principal Quaid-e-Azam Medical College Bahawalpur। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से ये हमारी एक्टिविटी है। तो इस दफ़ा आप भी जानते हैं कि बड़ा थीम डिफरेंट रखा गया है। डिफरेंट इन द सेंस कि अनइक्वल वर्ल्ड, दैट मीन्स कि तीन तरह से हम इस इशू को देख सकते हैं। एक तो इस तरह से कि जब से ये कोविड की वबा या एपिडेमिक शुरू हुई है, इस वजह से बहुत सारे लोगों में ये इलनेस या साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स में इजाफा हुआ। बहुत सारे पेशेंट्स जो ऑलरेडी अंडर ट्रीटमेंट थे, उनको ट्रीटमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कंप्रोमाइज हो गई। होम आइसोलेशंस वजह बनी, जॉबलेसनेस वजह बनी, और जो उनको सोशल एक्टिविटीज थी, दोज वर रिड्यूस्ड टू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इन कॉजेज़ की वजह से, पेंडेमिक की वजह से, सोशल इशूज़ की वजह से ये मामला बढ़ गए। लेकिन आप भी जानते हैं कि जितनी तवज्जो हमारी फिजिकल हेल्थ पे होती है, मेंटल हेल्थ पे ना ही उस तरह से रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए जाते हैं और ना ही उस तरह से उन पे काम किया जाता है। तो इस सेंस में इस दफ़ा WHO ने ये हाईलाइट करने की कोशिश की है कि मेंटल हेल्थ इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेशनैलिटी, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, ये सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और सेम वे हेल्थ के दायरा कार में जिस तरह फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, द सेम वे मेंटल हेल्थ इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आज का खास जो स्पेसिफिक टॉपिक है ये है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये भी एक बहुत और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट का। रीज़न ये है कि इट इज़ ऑलमोस्ट अ वेरी कॉमन हैपनिंग, बट इट इज़ वेरी लेस लाइकली डायग्नोज्ड, एट लीस्ट इफ डायग्नोज्ड इट इज़ डिलेड बियॉन्ड द ट्रीटमेंट लेवल इवन। रीजंस क्या होती हैं मोस्टली कि ये जब ऑल ऑफ ए सडन कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह ना करे, या कोई फिजिकल या सेक्सुअल असॉल्ट हुआ और उसमें ख़तरा था कि अल्लाह ना करे आपकी जान को ख़तरा है या आपको एक सीवियर इंजरी हो सकती है। उस सूरत हाल के बाद बंदे में ये सिम्टम्स आती हैं जिसको हम क्राइटेरिया ऑफ डायग्नोसिस भी कहते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिस्टम होती है अ सेंस ऑफ आइसोलेशन एंड नम्बनेस, कि पेशेंट और द सफरर इज आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज, फ्रॉम द पीपल अराउंड, फ्रॉम द फ्रेंड्स एंड द फैमिली। They spend time in isolation. Secondly, they themselves are numb. Their thought process is not normal. They are emotionally different or numb at time. They don't express any emotions, or if express, then express their negative emotions. Second important, the nightmares. It is difficult for them to fall asleep, and if they fall asleep, they had terrifying dreams, which make them wake up. Even in the dream, they recall that event of accident or assault or whatever happened to them that was threatening to the life. They recall all that. In the daytime, they have flashback. They are fully alert, they are conscious, but they recall the event. It is not their choice. It is termed as an intrusive thought process. They are just sitting calm and quiet. All of a sudden, thoughts come in his mind and he becomes upset. And that reminds him all those terrifying thoughts related to that event and emotion to that event. Then a sleep disturbance. As such, they are disturbed by their sleep. At times they are unable to fall asleep, or at times they get up early in the morning and it is very difficult to feel rested. And even if they have a normal sleep, they don't feel fresh in the morning. Then their physical life is compromised. They are isolated. They are not carrying their pursuits of hobbies. They are not participating in the social activities, family activities. Even they are not going to their work. And that is worse outcome. Then as far as the diagnostic criteria is concerned, this is very important. That patient may have multiple symptoms, but there is some criteria which specifies that minimum number of symptoms should be there to diagnose. One is intrusive phenomena. Intrusive phenomena, patient is not voluntarily or actively thinking, it just come to their mind. That is, जैसे अभी मैंने मेंशन किया कि उनके जहन में ऑल ऑफ अ सडन बगैर इरादे के ख्यालात आते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होते, उनको फ्लैशबैक्स होते हैं। इनमें से कम एक सिम्टम का होना जरूरी है। उसके साथ दो सिम्टम्स जिसको हम कहते हैं कि जी इमोशनल सिम्टम्स हों या नेगेटिव सिम्टम्स हों, जैसे मोटिवेशन में नहीं है, वो एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है, एंगर में है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इट इज़ बेसिकली साइकोलॉजिकल अप्रोच, जिसमें एक तो हम कहते हैं जी प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर थेरेपी। दैट मीन्स कि पेशेंट इज एक्सपोज्ड टू दैट event or the place of happening for a longer time. They are taken to those places, if not all at once, first preparing them
relaxing them, जिसको हम कहते हैं anxiety relaxation training or breathing relaxation training, and they're exposed to that place multiple times till they finally settle down to their mind. Next important therapy is cognitive behavior therapy. This is again very important. In that behavior therapy, patient has to deal with the thought process, which are mostly anxiety prone and negative thinking process. Okay, why this happened? Why it happened to me? Those negative thoughts keep them disturbing. So a patient is debriefed about his thoughts, then he is briefed about what to do and how to handle their thoughts. And lastly, a very common psychological condition is EMDR, right? This is also practice. This is eye movement. This is termed as eye movement desensitization and reprocessing technique. This is specific technique to deal with this issue. If I summarize as PTSD, if this develops after sudden, severe, direct exposure or secondary to witness that event, they have multiple symptoms related to their mind and physical symptoms, and their treatment is basically psychological one. But if it doesn't work, then we can adopt the pharmacological therapy. In pharmacotherapy, we can go in detail, but to briefly say, that basically two drugs are recommended. One is sertraline and second is paroxetine. So that can be treated according to the age of the patient, state of health of the patient, and as per tolerance of the patient, a dose may vary. Thank you so much.